Hello, welcome to the talk. We have got today not some very good news about COVID-19. Let's start talking about it. Today is April the 11th, 2020. World has seen 1.7 million of cases and 104,000 deaths, which is not a very good figure, unfortunately, but there we are. USA is at the worst possible situation at the moment, and I suppose it will get still further worse. Worse is yet to come, as they say. 525,000 cases and 18,000 deaths. Texas has got 12,500 cases and 250 deaths. Fort Bend County, where we live, is 518 cases and 11 deaths. Europe में Italy, Spain, France, United Kingdom are now, it seems they are all at peak, particularly Italy and Spain, and UK perhaps. France is not quite yet there, and I think it's getting into still further higher number of cases. India, 7,600 cases and 249 deaths. Indian Research Council of Medical Research gives good figures on the website. I'll let you know about that. Pakistan has got 5,011 cases and 86 deaths. And the government of Pakistan also has got a good dashboard, very well organized. And I saw an NGRO booklet, which I think is good, but we'll talk about that as well. Bangladesh has got 424 cases, 27 deaths. टेस्ट जो जितने कैरिड आउट हुए हैं विच इज़ गॉट अ वेरी लार्ज सिग्निफिकेंस, मैं आपको उसकी बात करता हूँ. Iceland is doing about 90 cases per thousand population, and South Korea has done about 9 per thousand. But they have done it very well and controlled the whole situation in really very satisfactory manner. Australia Australia has done 12 tests per thousand. Austria, यूरोप में जैसे देखें तो ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, Germany, Czech Republic, and France, they are all doing between 10 to 20. France is not doing all that much. It is not good, although they have got very good facilities. Bahrain is very good, but they've got a lot of resources basically, and that's why they have 31 tests per thousand. Canada and USA are around more or less 10 and 6.6. Now look at this India and Pakistan's figure. India and Pakistan at 0.02 and 0.17, which is all in line with Philippines, Senegal, South Africa, Tunisia, Ecuador. They are all in the same league, basically, which means they are not testing enough and they don't know where the cases are. The cases are invisible. We don't know who they are. We cannot isolate them. We cannot put people contacts in the quarantine. And hence, it's really we are fighting in dark. इसके अंदर मैं आज आपको थोड़ी सी टर्म्स की वो मीनिंग बताऊंगा, ताकि जो टेलीविज़न पे आप रोज़ मेडिकल डॉक्टर्स को और कंसल्टेंट को सुनते होंगे, दे आर यूजिंग सर्टन टर्म्स विच शुड मीन समथिंग टू यू इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन. एक तो है कंटेनमेंट, विच रिफर्स टू द यूज़ ऑफ एनी अवेलेबल टूल्स टू मिटिगेट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, विच मीन्स टेस्टिंग फॉर डिजीज़ सर्वेलेंस, isolation of contacts, contact tracing due to long incubation, because incubation इसका जो है 15-14 दिन तक का है, 5 से लेके 14 दिन, तो which makes it difficult as against other diseases जिसमें 3-4 दिन का होता है. इसमें अगर बंदे को अगर बीमार हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है और 10-12 दिन के लिए घूमता फिरता रहे और लोगों को वो देता चला जाए, तो that is what makes things very difficult with this particular disease, COVID-19, and well, that's the problem. So hence testing and contact tracing are most important at this stage, I think, in India and Pakistan particularly. But let's see. Quarantining the contacts, social distancing, 6 feet plus between individuals, wearing masks, and frequent hand washing. Isolation इसका मतलब है अगर इस सिचुएशन में अगर किसी को खांसी, बुखार, नज़ला और सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ही शुड बी आइसोलेटेड इमीडिएटली. आइसोलेट करने का मतलब है कि उसको बिल्कुल ही अलग एक कमरे में और टॉयलेट भी उसका अलग हो और उसके नज़दीक कोई ना जाए और तकरीबन 10 दिन तक उसको आइसोलेटेड रखें. और जितने लोग उसके कांटेक्ट में आए हैं, they should all be quarantined or self-quarantined as we call it, but it's the same thing.
It means separation and restriction of movement of people who were exposed to the virus lest they become sick or they then give sickness to others during the incubation period. Mitigation जो है जब containment फेल हो जाता है तो फिर और ट्रांसमिशन ज़ीरो पे नहीं ला सकते हैं तो फिर वी हैव टू डू द मिटिगेशन. दैट मीन्स स्टे एट होम, सेफ एट होम. यहाँ पर अमेरिका में 3 टर्म लोग इस्तेमाल करते हैं. सेफ एट होम विच मीन्स रियली वॉलंटरी. स्टे एट होम इज़ काइंड ऑफ वॉलंटरी बट विद अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस. डू स्टे एट होम एंड डोंट गेट आउट. Shelter at home means absolutely almost like curfew. If you get out, you may be hurting someone and you may be hurting yourself. Hence, that's what it is. Anyway, इस particular situation में social distancing to slow the spread of the virus, schools को बंद कर दें, businesses को बंद कर दें, employees और customer को protect करने के लिए सारी चीज़ें बंद कर दें. Prepare hospitals to prepare for the surge of the cases. Cancelling of conferences, cancelling of sports events, जैसे कि अभी आपको पता है कि ओलंपिक्स पे उन्होंने एक साल के लिए पोस्टपोन कर दी है. लार्ज गैदरिंग को अवॉइड करें. अब यह है इंक्यूबेशन पीरियड की जो हम बात कर रहे थे. इट इज़ द टाइम इट टेक्स फॉर सिम्टम्स टू अपीयर आफ्टर पर्सन इज़ इन्फेक्टेड. मैं आज अगर इन्फेक्ट हो जाता हूँ तो मुझे अगर 2-3 दिन में अगर पता चलता है तो यस आई कैन गेट आइसोलेटेड. मगर मुझे 10 दिन के बाद 12 दिन के बाद पता चला तो आई विल बी इन्फेक्टिंग अदर्स. इसमें एक अच्छी बात यह है वैसे कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द इन्फेक्टेड or exposed cases may have minimal symptoms, and 80% of them have very minimal symptoms. 14% of them have got kind of serious disease, and 6% of them are really critically ill and they may need the ventilators. ये मैंने आपको पहले दिखा चुका हूँ ये वाली फिगर्स, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़. एक और फिगर एक और टर्म ये लोग इस्तेमाल करते हैं, आर नॉट. NAUGHT, R0 कह लें, जो भी कह लें. दिस इज़ वायरसेस बेसिक रिप्रोडक्टिव नंबर, मीनिंग देयर बाय कि अगर एक बंदे को अगर इन्फेक्शन है तो कितने और बंदों को दे सकता है. अगर एक से बड़ा अगर यह है, R0 इज़ 1 और 1.1 और 1.5. इस वक्त ये 2.2 2.3 के लगभग है कोविड-19 का, विच मीन्स एक बंदा इन्फेक्टेड है उसको 2-3 बंदों को इन्फेक्ट कर सकता है. ये जब तक नंबर 1 से नीचे नहीं आता है, लेस देन 1, जब तक ये बढ़ता चला जाता है. एक नीचे आने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है फिगर्स नए केसेस की और डेथ की भी. तो नाउ वी टू टॉक अबाउट द केस फैटेलिटी रेट, CFR. तो ये है कि जितने लोग हमें पॉजिटिव मिले हैं उसमें से कितने डेथ होती है. दैट इज़ केस फैटेलिटी रेट और CFR, जो कि तकरीबन 3.4 चाइना में बताई गई थी और इनफैक्ट अप टू 6% कुछ जगहों में बताई गई है, इटली वगैरह में. बट इट्स प्रोबेबली अराउंड 1% और सो. येट अनदर टर्म इज़ प्रिवेलेंस. प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज़ या इम्यूनिटी या इन्फेक्शन का मतलब है कितनी दूर तक और कितनी डेप्थ में ये डिजीज़ है, और हेंस दैट विल गिव यू एन आइडिया कि कितनी जल्दी ये हम इससे निजात पा सकते हैं या कितनी देर तक ये चलेगा. एक और टर्म आप देखते होंगे हर्ड इम्यूनिटी का. हर्ड इम्यूनिटी इज़ जब 50 to 60% ऑफ पॉपुलेशन इज़ इम्यूनिटी, देन द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़ स्टॉप्स. इसलिए कि इम्यूनिटी लोगों में है तो वो इन्फेक्ट नहीं हो सकते हैं. उनके अंदर एक किस्म का फाइट करने का एक प्रोटीन बन जाता है विच इज़ कॉल्ड एंटीबॉडी, एंड वील टॉक अबाउट इट इन अ मिनट. एक बल्कि इम्यूनिटी सर्टिफिकेट्स की बातें करने लगे हैं. पर्टिकुलरली जर्मनी इज़ प्लानिंग टू गिव certificate to immunity, a certificate to immune person who can go out safely and carry out their business, and they will not infect others because they have had the disease. Now they are immune, and in fact they can very well, very easily, very safely work और फिर से वापस इन्फेक्ट भी नहीं होंगे. US भी तकरीबन यही सोच रहा है कि शायद ये चूँकि रोलिंग आउट खोलने की बात कर रहे हैं हमारे यहाँ, तो मे बी वी विल प्रोबेबली हैव सिमिलर काइंड ऑफ थिंग. एंटीजन जो है, वायरस इटसेल्फ इज़ अ प्रोटीन एंड दैट इज़ एन एंटीजन. जब वो बॉडी में जाता है तो उसकी एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है. स्पेसिफिक प्रोटीन फॉर्म्ड इन पेशेंट्स बॉडी इज कॉल्ड एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी फिर डिफरेंट टाइम तक रहती है. जैसे कि मीजल्स में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है, मम्स में लाइफ टाइम होती है, टेटनस में 11 साल होती है, फ्लू जो नॉर्मल फ्लू है उसके अंदर 1 साल है, कोविड-19 का तकरीबन 1.5 साल है. इसका मतलब एक दफ़ा होने के बाद फॉर्चुनेटली नेक्स्ट टाइम जब ये फिर से शायद आए
जब तक हमारे पास वैक्सीन होगी, and we will be able to use the vaccine. Again, thank you very much. I think we have taken enough time. Today's reminder again, break the chain of spread, and that is by stay at home, stay safe, use masks. That's most important. Again, repeat again. Stay at home, stay safe, save lives, yours and others, and use masks. It is not only helpful, it is absolutely important. Thank you. Bye.